पहले हम लिखते हैं बेसिक HTML। और बेसिक HTML के अंदर हमारे पास होता है डॉक टाइप HTML, ओपनिंग एंड क्लोजिंग HTML टैग, और हमारे पास होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग हेड टैग। हेड टैग के अंदर हमारे पास होता है टाइटल टैग, लेट इट सेट टू बी एट्रीब्यूट्स, और हमारे पास है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बॉडी टैग्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स आर द नेम वैल्यू पेयर दैट वी पुट इनसाइड द ओपनिंग HTML टैग। ये वो नेम पेयर वैल्यू होता है जो हम ओपनिंग HTML टैग्स में लगा देते हैं। लेट्स से वी हैव अ पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ के ओपनिंग टैग में हमें लिखना है एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू विथ इन डबल कोट्स, एंड वी हैव टू राइट द एट्रीब्यूट वैल्यू। सो some value of an attribute will have always an attribute name और attribute value, मगर डबल कोट्स में। हम ज़्यादा ही डबल कोट्स यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल कोट्स। तो हमें खाली ओपनिंग टैग्स में एट्रीब्यूट नेम लिखना है और उसका वैल्यू, और उसका वैल्यू हमें डबल कोट्स में लिखना है। हम सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली वी यूज़ डबल कोट्स। लेट्स मी erase this. Let's begin our journey by writing the language attribute in the opening HTML tag. So we will write language. We will set to this en language, en for English. It gives us information about the HTML element. In this case, it is telling about the language of this page. इंग्लिश के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि हमारे पास अरेबिक है, अरेबिक के लिए AR, और हमारे पास उर्दू है, उर्दू के लिए UR, और हिंदी के लिए HI। सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉमनली यूज्ड एट्रीब्यूट। So we will start with the ID attribute. The ID attribute is uniquely identify the HTML element. So let's say we have a paragraph. तो हम पहले एक पैराग्राफ बनाएंगे like this. We have a paragraph and we give it an ID. Let's say S-01. We set the content as student name. This element consists of paragraph tag, content, and closing tag. Inside the opening tag, we have ID and its value is S-01. Now we use this ID attribute to identify this element inside this HTML page, and no two element inside the HTML page can have same ID value. In this case, S-01. Now we can see S-01. Now we can see we can create another paragraph, say student address, and we give it this paragraph an ID S-01. Let us give this ID S-01 in double quotes. And if we check output, we will get the output and there will be no error. Let's see at the output. There is no error, nor in student name nor in student address. But there is no recommended. You should not use same ID value twice. So instead of giving this element an ID S-01, we can write, let's say, S-01 address, S-01 address for the student address, and S-01 name for the student name. The ID attribute is like our school ID. No student can have the same ID. Likewise, no HTML element inside a given page can have the same ID attribute value. जैसे कि मेरा नाम अजहरुद्दीन पीर है, मेरी आईडी कार्ड पे मेरी डिटेल्स दिए होंगे और दूसरे के उसके डिटेल्स दिए होंगे, मगर हमारी आईडीज़ मैच नहीं होंगे। वैसे ही
no HTML element inside a given page doesn't have same id attribute value. The next most commonly used attribute is class attribute. It is used to create groups and more than one HTML element can share the same class value. For example, let's we create a paragraph and we make a class of fruits, and let's say it apple. Now similarly we can create another paragraph and give it a class of fruits in double quotes. Double quotes are must, and say it mango. Similarly create another class of fruits. Let's say it orange. Orange. So in this HTML page, more than one HTML element is having the class value set to fruits. So we have created a group of fruits. So a class is like a group. For example, we can have a group of computer students or group of chemistry students or group of Arabic students. So each group can have one or more than one students inside the group. Similarly, in the HTML page, we can have one or more than element sharing the same class value. Just like they have the same class value, just like they have the same class as fruits. The next attribute that we are going to discuss about is style attribute. So let's go ahead and create a heading tag. तो चलो हम create करते हैं heading tag. तो let's say it hello world. एंड इसके बाद हम लिखते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट इन h1 टैग. तो लिखते हैं स्टाइल इन h1 टैग. तो अगर हम चाहते हैं इसका कलर हम ब्लू करें, सो वी विल सेट द स्टाइल वैल्यू एट्रीब्यूट टू कलर कॉलन कलर कॉलन blue, then semicolon. So now you can see the output. The text is in blue color. तो हमारा टेक्स्ट जो आ गया हेलो वर्ल्ड इन ब्लू कलर. तो हम एक नया पैराग्राफ बनाएंगे. दिस इज ए सिंपल पैराग्राफ. सो लेट अस से वी वांट टू स्टाइल दिस and increase the font size of this. We want to increase the font size to 120%. Now we will set the style attribute to font size. And we'll set to 120%. And we'll set to 120%. So this style attribute is used to style the element. This type of styling of HTML element is called inline styling. ये inline styling हम in detail पढ़ेंगे CSS में. तो आगे चलते हैं. तो let's move on in other attribute, that is title attribute. As the name suggests, it is used to give the title to the HTML elements. तो ये होता है यूज टाइटल, मतलब टाइटल जो हम देते हैं उसी के लिए हम यूज करते हैं टाइटल एट्रीब्यूट. सो लेट्स क्रिएट ए पैराग्राफ. लेट्स से इट. So let us create a paragraph. Let's say this is another paragraph. This is another paragraph having title. And inside the opening paragraph tag, we will set title attribute. Let us say it hello. Now if we move the mouse on the top of this paragraph,
we will see the title hello. Thanks for watching.